So how do functions break up? They stop calling each other. This is just like again a light-hearted joke. Uh, basically, before we start and go into things. So let's move on. So recycling code functions and modules. Talk about recycling. Recycling is very important in the programming world. Uh, reuse is just as important. बहुत important है. You do not reinvent the wheel. Obviously, अगर आपका प्रोग्राम जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकें मुख्तलिफ उसमें अपने प्रोजेक्ट्स में. देर आर सर्टन थिंग्स जब आप आगे जाएंगे देखेंगे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एआई में जो लॉगरिथम्स जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वी हैव टू क्रिएट लाइंस ऑफ कोड कि हम उनको हर किस्म के सिनेरियो में यूज़ कर सकें इंशाल्लाह. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट नोन एज रिसाइकलिंग कोड फंक्शंस. फंक्शंस कम हैंडी. फंक्शंस जो हैं वो बहुत काम आते हैं. यूजुअली like for example using list and range, we can use list and range, that's a function. Or try an example list this. So try करें आप इसको अपने अपने विंडो में टाइप करने का and then see what happens. So if I do this, it will just list me 0 1 2 3 4 5. Now if I do this again with say 0 to 1000 or 500, it will just keep on doing it like for 500 times, right? So within a window you can see कि 500 दफ़ा लेके चला गया उसको. So that's basically in a way कि हम चीज़ों को मिनिमाइज़ करके रख सकते हैं. लार्जर लिस्ट के लिए हम लोग को इतनी ज़्यादा चीज़ें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन यूज़ लिस्ट एंड रेंज टू डिफ़ाइन मैनी थिंग्स, राइट? So let's move on inshallah. Yeah, before we do, I mean just wanted to say कि भाई functions important क्यों है? Functions basically are chunks of code that tell Python to do something. That's very important. So there's one way to reuse a code. You can use functions. आप function use कर सकते हैं in your programs again and again. Or when you're writing simple operation programs, functions are handy, like बहुत ज़्यादा handy आते हैं. For example, अगर आप game development कर रहे हैं या अगर आप website development कर रहे हैं या अगर आप machine learning, deep learning, AI में इसका तो बहुत ज़्यादा काम आता है. You have to make sure कि assuming कि you want to finish writing a program like within this century, functions come handy because rather than आप multiple codes type in करें multiple lines, you just use small lines to define that, right? Now parts of function आपने define करना होता है, right? You have to define a function. Like for example, test func equals Mary. Now I'm deciding कि भाई जो test func है वो Mary के बराबर है, and then define test function as my name, and then you say print hello my name, and then it will do that. So let's try that inshallah. So now और से देखिएगा कि यहाँ पर मेरी presentation में एक mistake है. Presentation mistake ये है कि मैंने यहाँ पर जब आप इसको नहीं sorry, it's everything's fine. So the point is that when we go back and type this is test function Mary and then define test function as my name and then print hello, right? And then you use the variables tuples and then you say कि भाई नाम मेरा बताएं, तो it will show you the name as hello Mary, right? So that's very important. It comes handy in defining the beginning. Short for define, like def is basically short for define. It tells कि भाई existing function को आपने किस तरीके से define करना है. You can run the function by calling its name using parentheses around the parameter value, right? So we use Mary like this, right, over here with a parentheses define किया. That's how we define the function. The function could take 2, 3 or any other parameters and numbers, right? So it can take multiples like Muhammad Faisal, or it can take Muhammad Ali. It can define those things as well. So let's go back and see if there is an example over here like this. Multiple ways of writing functions, like test function Muhammad Ali, define test function as first name and last name, and then test function Muhammad Ali, right? And then when we say print hello, first name and last name, and it will do that, right? So that's how we reuse the code in a way that the two values for these parameters are separated by a comma, right? So we do that. Remember this कि test function हमने define किया पहला नाम मोहम्मद, first name, last name Ali, and then we say कि test function define test function first name and last name, and फिर हमने define किया कि भाई ये test function जो है इसका जो first name है
वो मोहम्मद अली है, like this, and then जो first name है मोहम्मद है, जो last name है वो अली है, and then we say test function मोहम्मद अली, and then we say कि print hello as use both of them, first and last name, and then it will give you the first and last name, right? So we can try this inshallah again in the Jupyter notebook. So you try this and you type it in and then you proceed. So let's move on inshallah. So creating variable. One of the other ways you can do that is basically a function is often used to return a value, right? Like you can, agar aapne wo nahi karna, then you just create variables like first name Muhammad, last name Omar, test function first name, last name, and then print first name, right? So that's one way of doing it. The other way is basically you use the return command to return a value as well. So there are multiple ways of how you can define a variable, how you can use functions, so on and so forth. And all of them, they do come handy. So let's move on, inshallah. So the return is quite unique when it comes to functions and modules. So return is basically you define a variable, right? And then you say, okay, by first variable 10, second variable 20. Now first variable into second variable, right? Multiply by print first variable, right? So the function is often used to return a value using a return statement. We do that. For example, you could write a function to calculate how much money you are saving or how much money you have or how much variables do you have. You can do that. There are different advantages of doing this thing. It just clarifies that agar aapke paas, in this example, we create the function called variable test, which multiplies two variables together, first variable and second variable, and then give me that the result. So that's exactly what we're trying to do over here. If we call this function using print, agar hum print karenge, then we get the result differently, right? Let me see कि इसका अगर block test, which multiplies two variables together, first variable and second variable, and then give me that the result. So that's exactly what we're trying to do over here. If we call this function using print, अगर हम print करेंगे, then we get the result differently, right? Let me see कि इसका अगर block of code अगर मैं इसको different define करता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? Let me see. Let me think about an example. This is a good example. So we say another variable 100, define variable test2, and then first variable 10, second variable 20, and then return first variable into second variable into another variable, and just give me the result variable test2, right? So in this code, even though the variables first variable and second variable can't be outside the function, they are within function के साथ ही हैं, but what we're trying to do is like outside the function, we can still use b inside at it as well. Here's the result like calling this function, like दो functions को आपने एक साथ call किया है, जो first and second variable है, ये उसके variable के नीचे ही defined हुआ है यहाँ पर, right? But what we are trying to do is कि we are saying कि भाई जो ये line of code है, also pick that one as well. So now suppose you were, like this is अभी हम आगे lines of मुख्तलिफ lines of codes करेंगे, that will give you more clarity in terms of like functions and variables, इनका क्या मकसद है. But just to park it over here, अगर आप एक और variable define करते हैं अपने program के अंदर, you can do that as a third variable on the top. You don't have to do it over here because जब आपका program बहुत बड़ा हो जाता है and they can become more complex, you can just add a line on the top. You don't have to go down and see कि भाई ये line कहाँ पर थी जहाँ पर मैं third variable define कर सकता हूँ या fourth variable define कर सकता हूँ. You can do that. So functions come handy in that aspects, inshallah. फिक्र नहीं करें भी इसके हम quizzes test अभी हम elf primer में तो we are just telling you this is just a quick introduction है, लेकिन आगे जाकर हम इसके और मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे so that you have more clarity inshallah. Projects भी करेंगे इसके ऊपर inshallah. Modules. Python में module is a Python object with arbitrarily named attributes that can be bind and reference. Simply a module is a file consisting of Python code, and a module can define functions, classes and variables. A module can also include runnable code, right? Modules जो हैं Python के अंदर वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं. I mean these are like built-in classes of code that we can use for multiple things, right?
फॉर एग्जांपल जब हम गेम डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अलग मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई के अलग मॉड्यूल्स हैं, अलग लाइब्रेरीज हैं हमारे पास जो वी डोंट हैव टू री इन्वेंट अगेन। देखें, मकसद इस पूरे कोर्स का ये है कि वी डोंट वांट यू टू बिकम अ पाइथन डेवलपर, नहीं, मकसद ये है कि आपको इतनी पाइथन आ जाए कि आप उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके डेटा साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी जब आप कर रहे हो या ऑफेंसिव टेस्टिंग कर रहे हो या फोरेंसिक टेस्टिंग कर रहे हो, आप उनके मॉड्यूल्स को यूज़ करते हुए जो पहले से प्री पैकेज बनाए मॉड्यूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप अपना रिजल्ट डिराइव कर सकें, ये मकसद है। मकसद, अगर आप माइक्रो मास्टर्स देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलंबिया का, ये डेटा साइंस का या उसका, दे जस्ट से कि बेसिक आपको पाइथन आनी चाहिए। हम आपको बेसिक से ज़्यादा पाइथन सिखाएंगे कि आपको अच्छी खासी पाइथन आ जाए, बट द पॉइंट इज़ के आपको इतनी चीज़ें पता चल जाएँ कि भाई किस तरीके से क्या, किस वक्त कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है ताकि आप बिल्कुल उसमें कंफर्टेबल हो इंशाल्लाह, राइट। सो दैट्स द होल आइडिया। सो मॉड्यूल्स की एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि भाई import time, it's a built-in module. Here the input command is used to tell the Python that we want to use the module time, right? So import time हो सकता है, import machine learning में different modules आप कॉल कर सकते हैं उसको। जुपिटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम स्पाइडर करेंगे डेटा साइंसेस के अंदर तो उसकी डिफरेंट मॉड्यूल्स आप कॉल इन कर सकते हैं। एंड देन वी से प्रिंट टाइम, ASC टाइम, राइट, शो मी द टाइम। अगर मैं इस स्टेटमेंट को रन करता हूँ इन जुपिटर, इट विल शो मी द टाइम, राइट, कि इम्पोर्ट टाइम, मुझे टाइम मॉड्यूल को कॉल करो और मुझे टाइम प्रिंट करके दिखाओ, एंड देन विल शो कि भाई ये टाइम, इस वक्त ये टाइम चल रहा है, राइट। सो जस्ट इन रियल टाइम मैंने लेक्चर आपके लिए आज क्रिएट किया ताकि आपको पता चले कि भाई क्या टाइम है, ठीक है। तो इट शोज़ इन क्लैरिटी कि भाई किस तरह क्या चीज़ें चल रही हैं। सो इमेजिन कि जब आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई में काम करेंगे तो यू हैव टू कॉल इन द टाइम्स, लाइक यू हैव टू कॉल इन दीज मॉड्यूल, जैसे import module and you describe the module scikit for example or TensorFlow or something like that. जब आप उसको कॉल करेंगे it will do all those things automatically to derive the results for you, and that's what we do inshallah, right? So let's move on. Here is another example of module, like age 11 हमने define की, if age is greater than equals to 10 and less than equals to 13 then print this, else print हाँ, right? So this is another module example आपके लिए है जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं। सो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे यू विल गेट टू नो दीज थिंग्स मोर एंड मोर, एंड देन यू विल सी के किस तरीके से क्या चीज़ें हो सकती हैं। रादर देन क्रिएटिंग द एज, हम एक काम ये कर सकते हैं, गिव इट अ स्पेसिफिक वैल्यू बिफोर द इफ स्टेटमेंट। देखें, मॉड्यूल हम उसको एक और तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें कि हम बचाएं, हम ये एज डिफाइन ही नहीं करें, हम एक मॉड्यूल को कॉल करें और से कि भाई एज उसमें जो भी डाली जाए अगर वो इसमें मीट करेगी then give me the value, right? So you can call that function by entering its name and then tell it what the number to use by entering the number in parentheses, right? So that's how it works out. Now इसकी बहुत specific examples होंगी आगे जाकर इंशाल्लाह. Right now we just want you to get accustomed to these things कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आएँ, आपको आसानी हो, and that's it, right? So अभी बिल्कुल इस पर स्ट्राइट मत कीजिएगा, परेशान मत होइएगा इंशाल्लाह, क्योंकि द होल आइडिया इसके प्राइमर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी है। इस बेसिक के ऊपर फिर आप अल्फा आएगी, फिर बीटा आएगी, फिर गैमा आएगी, देन वी कीप ऑन बिल्डिंग इट, एंड बाय द टाइम यू कंप्लीट द ज़ेटा पाइथन यू विल बी एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? दैट्स द होल आइडिया इंशाल्लाह। सो जज़ाकल्लाह खैर। कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते